This Today my topic is processor or CPU. Hello kids, do you know who is? This is a greeno. Oh no, this is a redo. Yeah, this is a redo. Hello, I am redo. Now objectives are, by the end of the lesson we will able to describe processor, recognize case. Recap. Dear student, do you know about computer? Do you know about computer? Everyone, do you know about computer? Yeah, tell me what is a computer? Computer is an electronic machine that can store and process data. It is the combination of hardware and software. It is the combination of hardware and software. Dear student, do you recognize these parts of computer? Do you recognize of parts of computer? Tell me, what is this? This is a keyboard. This is a keyboard. And second one is, this is a case. This is a case. And third one is a screen. This is a screen. And last one is, do you know what is this? This is a mouse. This is a mouse. Very good. Now I tell you, this is a case. This is a case. Do you know what is this, dear students? Hello shining star, do you know what is this? This is a case. The case controls all computer's parts to do tasks. CPU stands for Central Processing Unit. CPU stands for Central Processing Unit. The case holds many computer parts. The case holds many computer parts. Processor. Dear student, do you know who is? Dear student, do you know who is? Yeah, this is a greeno. Hello, I am greeno. Dear student, greeno tell us this is a processor. This is a processor. Processor, brain of computer. Processor, brain of computer. Dear student, do you know processor is inside the case? This is a case. This is a case. Processor is inside the case. This is a CPU. CPU mean processor. Processor is brain of computer. This is a CPU. This is a processor. Second name is, this is a processor. Processor means CPU. CPU means processor. And processor is inside the case. This is a case. This is a case. Processor inside the case. Oh yeah. Processor, do you know the case holds many computer parts? The case holds many computer parts. These are many parts of computer. Dear student, this is a RAM. This is a storage. And this is a motherboard. This is a motherboard. Green part is a motherboard. Now tell us
प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर होने वाले सब कामों की देखभाल या निगरानी प्रोसेसर ही करता है। प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़फ़ है। इसको सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। जिस तरह इंसान के अंदर एक दिमाग होता है, इसी तरह सीपीयू में भी एक कंप्यूटर में भी एक दिमाग होता है। इसी तरह सीपीयू भी कंप्यूटर में दिमाग का काम करता है। Dear student, do you know this is a processor? This is the brain of computer. Processor is inside the case. Processor is inside the case. Processor is the brain of computer. Processor is the brain of computer. This is a processor. Processor is the brain of computer. Number third is processor receive orders from the input devices and send orders from output devices. For example, I type some letters on the keyboard. Keyboard is input devices. Input devices, keyboard. I type letters. Letters send to a processing device. For example, CPU. This is a CPU. This is a processing device. This is a processor. Processor send order and then type letters show on the screen, monitor screen. जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। वहाँ से वो जो ऑर्डर जो है रिसीव करता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अब हम कह रहे हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो रिसीव करता है, जो हम लेटर्स टाइप करते हैं या नंबर टाइप करते हैं वो ये अपने पास रिसीव करते हैं। फिर यहाँ से ये ऑर्डर करते हैं। ये प्रोसेसर जो है ये ऑर्डर सेंड करते हैं मॉनिटर को, स्क्रीन को, कि ये जो नंबर फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया CLASS क्लास, तो क्लास टाइप किया मैंने कीबोर्ड से, जो इनपुट डिवाइस है वो ऑर्डर चला गया किसके पास गया डियर स्टूडेंट? प्रोसेसर के पास। इसके पास ये जो प्रोसेसर है इसके पास ऑर्डर चला गया कि CLASS क्लास जो है वो टाइप किया गया है। अब वो शो कहाँ करवाएगा? ये सेंड करेगा ऑर्डर किसको? मॉनिटर को, और वो यहाँ पर हमें क्लास लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप किया हमने किससे? कीबोर्ड से। किसके पास हमारा ऑर्डर गया? किसने रिसीव किया? प्रोसेसर ने। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वहाँ से ऑर्डर किसके पास गया? नेक्स्ट थर्ड नंबर पर मॉनिटर के पास। तो मॉनिटर को हमें स्क्रीन पर शो होगा क्लास लिखा हुआ। ठीक हो गया। तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, उसने हमें क्लास शो करवा दिया। नाउ नेक्स्ट further I will explain. This is a processor. This is a processor. Processor is a very small device. Processor is inside the case. किसके अंदर होते हैं? प्रोसेसर जो है वो इस केस के अंदर होते हैं। This is a case. Processor inside the case. Processor is the brain of कंप्यूटर। प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। प्रोसेसर ये केस के अंदर होता है। प्रोसेसर जो है वो ऑर्डर को रिसीव करता है इनपुट डिवाइस से और सेंड करता है ऑर्डर आउटपुट डिवाइस से। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ स्क्रीन। दिस इज अ स्क्रीन। दिस इज अ स्क्रीन। The screen displays all videos, games, photos and programs. A screen is
also known as monitor. स्क्रीन को हम मॉनिटर भी कहते हैं. हम जानते हैं कि दिस इज़ अ मॉनिटर, लेकिन हम ये जो इसकी स्क्रीन है, जो जिसके ऊपर हमें राइटिंग मटेरियल नज़र आता है, जिसके ऊपर हमें गेम्स नज़र आती हैं, फ़ोटोज़ नज़र आती हैं, वीडियो नज़र आती है, उसको हम स्क्रीन कहेंगे. The screen is the output device. The screen is the output device. I will explain again. The screen display all videos, games, photos and programs. A screen is also known as monitor. The screen is the output device. Next, this is a mouse. This is a mouse. It is also the input device. It is also the input device. It moves the pointer on the screen. This is a pointer. This is a pointer. This is, ये जो मैं आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है ना, एरो टाइप, ये एरो जो है ये पॉइंटर है. It is also the input device. It moves the pointer on the screen. Mouse has 2 buttons and third one is a scroll wheel. This is a scroll wheel. This is a right button and this is a left button. Okay, next, keyboard. This is a keyboard. This is a keyboard. The keyboard types on the computer. The keyboard types on the computer. We can give commands to processor, mean as CPU, using keyboard. We can give commands to processor using keyboard. It is the input device of the computer. Keyboard has many keys which can be pressed to make characters like numbers, letters or symbols appear on the screen. कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं, सिंबल्स टाइप करते हैं और वो शो कहाँ होते हैं, ऑन द स्क्रीन. नॉर्मल कीबोर्ड जो है उसकी कीज़ जो हैं वो 104 होती हैं और उससे और जो एडवांस होते हैं उनकी 104 से अबव कीज़ भी होती हैं. नाउ Now my dear, tell me again, what is a processor? Processor is inside the case. Processor is the brain of computer. Processor means CPU. Processor means CPU. But this case is not a CPU. This case is not a CPU. This is a case. CPU is inside the case. CPU mean processor. Processor is inside the case. Processor और CPU एक ही डिवाइस है. This one, this is a CPU और this is a processor. ये एक ही डिवाइस है और इस एक डिवाइस के दो नाम हैं. इसको प्रोसेसर कह लें या इसको CPU कह लें, लेकिन ये जो केस है ये CPU नहीं है, ये केस है. और ये जो डिवाइस है, जो प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये इस केस के अंदर होता है. ठीक हो गया. अब टेल मी, what is processor? Dear student, tell me what is processor? Yes, processor is a brain of computer. Processor is inside the case. Processor receive order from input device and send order from output device. Clear, dear student? If you like my video, then subscribe my channel and like my videos and share my videos.
अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प आउट हो सके, दूसरे बच्चों को इससे मदद मिल सके प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करने में और अपने लेक्चर को अच्छी तरह से अपने सबक को याद करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।